Good morning, class. So now let's that we have done revision of integers of all the topics we did in 6th standard. We'll start with 7th standard topic. Today's objective is multiplication of integers. Before we start with the topic, let's again revise what do we mean by integers and the types of integers. Integers are whole numbers like 1, 2, 3, 1, 2, 3, and so on. These are called positive integers. Integers also have negative numbers and 0. Negative numbers will be like -1, -2, -3, and so on. Till now, we have studied addition and subtraction of integers. In today's class, we will see multiplication of integers. So let's begin. Rules on how to multiply integers. There are two rules that you need to remember, two steps that you need to follow to multiply integers. Step 1. Step 1 is multiply their absolute value. Absolute value means without considering the sign. For example, plus 5. Absolute value of plus 5 is 5. And absolute value of minus 5 is 5. Alright. After you've multiplied the absolute values, forget about the sign, just multiply the values. Then in the step 2, we will determine the sign of the final answer. जो final answer है, हम उसका sign बताएंगे. उसका sign हम कैसे decide करेंगे? That is decided using the following conditions. There are two conditions. Condition number 1. If the signs of the two numbers are same. अगर हम दो सेम साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव होएगा, प्लस होएगा. If we multiply plus and plus, we get plus as an answer. If we multiply minus sign number, minus with minus, we get plus. दोनों सेम होने चाहिए. अगर दोनों सेम है तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव ही होएगा. If the signs of two numbers are same, if the sign of two numbers are same, the product is always a positive number. Yes, that's condition number 1. What is condition number 2? If the signs of two numbers are different, if the signs of two numbers are different, the product is always a negative number. So, अगर आप प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस आएगा. अगर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर माइनस आएगा. Yes, so these are the conditions. So if we want to multiply two numbers, two integers, what do we do first? Step number 1, we multiply their values. Without looking at the sign, we just multiply them. Yes, after we have multiplied, how do we determine the sign of the number? What we do is, we see if both the numbers have same sign, both are positive or both are negative, then the answer is positive sign. If in the two numbers even one number is negative, then the answer is negative. Okay, so one number is negative, answer is negative. First number positive, second number negative, answer negative. First number negative, second positive, answer is negative. To understand everything in a better way, let's look at few examples. So these are the 4 conditions. These 1, 2, 3, 4. These conditions I have listed here. Now we'll do few examples so that this becomes more clear to you. All right. So let's begin. So we have, according to this condition, plus 2 multiply by plus 5. Yeah, this is equal to question mark. Okay, so let's recall the steps. Plus 2 multiply by plus 5. This can also be written as plus 2 can also be written as 2 multiply by 5.
जब हम किसी नंबर पे अगर कोई साइन नहीं है, प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो आप अज्यूम कर लो वो प्लस ही है. +2 मल्टीप्लाई बाय +5 इज एक्चुअली में 2 मल्टीप्लाई बाय 5. अगर हमारे पास किसी नंबर का साइन नहीं है, देन हम अज्यूम करेंगे कि वो प्लस ही है. ठीक है. सो हियर यू सी बोथ द साइन आर सेम, तो आंसर में क्या आएगा? प्लस. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10. दैट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, साइन चेक करो. साइन कैसा है? प्लस एंड प्लस, तो दोनों साइन सेम है, तो आंसर में क्या आएगा? प्लस 10 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? +10. या तो +10 लिखो या फिर 10 लिखो, बात एक ही है. क्योंकि अगर नंबर के पास साइन नहीं है, उसका मतलब क्या? उसके पास बाय डिफॉल्ट प्लस साइन है. अगर नंबर के पास साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट प्लस साइन है. यस. ओके, let's see another example. So we have +5 multiplied by +8 is equal to. Step number 1, साइन को भूल जाओ, साइन मत देखो, सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लाई करो. 8 5s are, yes you are right, 40. एंड नाउ अब हम साइन डिटरमाइन करेंगे इसका. तो इसका साइन क्या होगा? दोनों का साइन क्या है नंबर का? दोनों का साइन प्लस है, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस. तो साइन आ गया प्लस. यस. So understood this condition? All right, let's move on to second. So let's see, -2 multiplied by -5, all right, is equal to question mark. ठीक है. -2 को हमें -5 से मल्टीप्लाई करना है, तो देन लेट्स सी हमारे पास क्या आता है. ओके. सो स्टेप नंबर 1 क्या है? साइन भूल जाओ, बस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो. तो 5 × 2 क्या होता है? 10. यस, करेक्ट. स्टेप नंबर 2 क्या है? हमें अब साइन चेक करना है कि क्या साइन होएगा. यस. सो दोनों नंबर का साइन सेम है. अगर दोनों नंबर का साइन सेम है तो आंसर क्या होएगा? पॉजिटिव. सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है? प्लस. तो आंसर क्या होगा? +10. करेक्ट. यस. यही कंडीशन बोल रही थी ना. इफ द साइन ऑफ द टू नंबर आर सेम, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर. यस. So plus into plus is plus, minus into minus is also plus. Plus multiply by plus is equal to plus, minus multiply by minus is equal to plus. ठीक है. All right, let's take one more example. So I have -5 multiply by -8. Let's see what this is. 8 5s are, yes you are right again, 40. एंड ये स्टेप 1 है. स्टेप 1 क्या होता है? पहले सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, साइन मत देखो. यस. सो दिस शुड बी रिटन लाइक दिस क्लास. ओके, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो. या सो आई हैव रिटन ब्रैकेट्स में. ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में नहीं लिखो, एक ही बात है. आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, आप ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हो. ठीक है. मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ. ऑल राइट. नाउ हमने क्या किया? 8 × 5, सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 40. फिर उसके बाद हम साइन चेक करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉजिटिव. साइन अगर जिस दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उन दोनों का साइन सेम है तो आंसर का साइन पॉजिटिव होता है. यस. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स सी. अब कंडीशन है, एक साइन माइनस का, एक साइन पॉजिटिव है. तो कंडीशन नंबर 2, इफ द साइन ऑफ टू नंबर्स आर डिफरेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ नेगेटिव नंबर. यस, प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होएगा. सो लेट्स सी, फर्स्ट नंबर क्या है? नेगेटिव. सो लेट्स टेक -2. इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? प्लस से. सो +5 इज इक्वल टू question mark. Yes. Let me make this bigger so that you can understand better, you can see better. All right, let's see. So what's step number 1? Let me put this in bracket so that you don't get confused.
Alright, what's the step number 1? Step number 1 is multiply the numbers. Don't look at the sign. Minus और plus sign को ignore करो. बस इन दोनों को सबसे पहले नंबर को ऐसे multiply करो. Sign मत देखो. तो 5 into 2 is 10. Yes. Then step number 2 क्या है? हमें नंबर का sign decide करना है. Yes. So let's see. 2 का -2 negative है and 5 positive है. So जब दोनों जिस दो नंबर को multiply कर रहे हैं अगर sign उनके different है एक माइनस और एक प्लस है तो आंसर क्या होगा नेगेटिव माइनस सो ये आंसर हो जाएगा -10 यस करेक्ट देन लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल सो वी हैव minus of 5 and we are multiplying it with what we are multiplying it with plus of 8 ठीक है so step number 1 again we have to multiply the numbers forget the sign भूल जाओ सिर्फ numbers multiply करो 5 into 8 is 40 and now second step is look at the sign एक minus है एक plus है so if one is minus other is plus signs are different so answer क्या होगा negative so minus got it very good let's move forward again let's see here one number is positive and the second number is negative then the answer is what negative so two numbers which we are multiplying have different sign then the answer will be a negative number so we have plus 2 multiplied with minus of 5 then we have to find the answer come on do it in your notebook as I'm doing come on you do it along with me all right so step number 1 tell me what was step number 1 yes you are right we have to first multiply the number and ignore the sign बिना sign देखे numbers को multiply करना है so 2 into 5 is 10 now what is step number 2 come on tell me yes again you are right we have to see the sign how do we decide the sign let's check one is positive the other number is negative so if we have different sign then the answer will be negative yeah different sign negative same sign positive same sign positive same sign positive different sign negative different sign negative let's take one last example we have positive 5 and we are multiplying it with what we're multiplying it with negative of 8 negative 8 let's see what this is step number 1 you know this tell me step number 1 is multiply the numbers and ignore the sign so 5 into 8 is 40 and step number 2 see the sign so 5 का number का sign क्या है plus and minus plus एक plus है एक minus है तो different हो गया sign अगर sign different है तो answer क्या आएगा negative so we get -40 yes easy all right with this let's jump into more questions okay you can here pause the video and make a note of this in your notebook ठीक है ये जो conditions है ये आपको याद करना पड़ेगा अभी याद कर लो मेरे साथ चलो same sign positive different sign negative yeah same sign अगर multiply कर रहे हैं then answer will be positive and अगर different sign multiply कर रहे हैं तो answer will be negative yes all right let's move forward all right so class this is your homework worksheet so I will just explain what you have to do so let's see find the product of the following so ये इतने सारे questions दिए इनके आपको product find करना है so -6 into -3 तो step 1 क्या होगा multiply the numbers so 6 into 3 is 18 yes and sign कौन सा आएगा दोनों same sign है minus minus so answer will be +18 yes like this solve all the questions okay question number 2 verify the following true or false हमें वेरीफाई करना है कि नीचे जो हमने लिखा है वो ट्रू है कि फॉल्स है कैसे करेंगे ये वाला साइड सॉल्व करो और आंसर देखो क्या आ रहा है ये वाला साइड सॉल्व करो और आंसर देखो क्या आ रहा है यस अगर दोनों इक्वल आते हैं
तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, then this is false. Okay, then next, find the product using suitable properties. All right, so अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर है तो भी हम कैसे करते हैं, पहले सॉल्व. Okay, so leave question number 3. Do not do question number 3. We'll do this later. Okay, so you can leave question number 3. Let's see question number 4. Replace the blank with an integer to make it a true statement. आपको इसको true करना है. अगर यहाँ -3 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 27 हो जाए. So -3 को मेरे को -3 into x कर सकती हूँ और equal to 27, then -3 नीचे आ जाएगा. Sweet. All right, class. So class, in today's homework, you have to do only question number 1 and question number 2. I will not give you remaining questions today. We will see this in Monday's class. All right. Bye-bye.